Tutta soprannome tutto, ma nella specie
So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's class. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I can see 53 participants are there in today's class. So, first of all, a quick recap of what we studied yesterday. कौन सा topic शुरू किया? Students, can you hear me? There? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. कौन सा topic हमने कल start किया था? Inflammation. Acute inflammation. Inflammation. Very good. हमने क्या कहा था कि inflammation is derived from which word? Anyone? Abdul Mueed, Shahriyar? Inflammatio. It's a Latin word, inflammatio, and inflammation is derived from that. And the meaning of inflammatio is to set on fire. And this name is given to inflammation because of the redness and the warmth that is associated with inflammation. ठीक है जी? उसके बाद हमने क्या बात की थी? It is a protective response, actually. It is a protective response and it gets rid of the inciting stimulus of cell injury and also the dead and necrotic tissue. ठीक है? इसका हमने कहा था कि mostly it has a beneficial role, but in some circumstances it becomes the cause of the disease. ठीक है जी? उसके बाद हमने acute inflammation की बात की थी. उसमें हमने कौन से events कल discuss किए थे? Harim Ilyas. Ma'am, vascular events or Good. cellular events? हमने कहा क्योंकि बेसिकली हमने कहा था कि तीन इंपॉर्टेंट इसके स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 इज वेसोडाइलेशन, नंबर 2 इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी एंड नंबर 3 इज द मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द वास्कुलर ल्यूमेन टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो कल हमने देखा था कि वेसोडाइलेशन हो जाती है and because of increased vascular permeability there is leakage of fluid, protein rich fluid into the interstitium and this results in the stasis in that particular area. ठीक है जी? So now we move on to the cellular events in acute inflammation. आप लोगों को दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर? Yes, ma'am. और इसमें से अगर ये मेरा कर्सर यहाँ पे आया है तो कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच सेल इट इज? Neutrophils. वेरी गुड, वेरी गुड. आपने क्यों कहा कि ये न्यूट्रोफिल है? व्हाई इजंट इट बेसोफिल और इओसिनोफिल? Mostly because इसमें nucleus बहुत ज़्यादा है. Because of the segmented nucleus and Yeah. the color of the cytoplasm, right? In basophils, Yes. the granules are coarse blue, and eosinophils, the granules are dark pink. And this color of the cytoplasm containing eosinophilic granules or primary granules, this is a neutrophil. And what is this cell? जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कौन सा सेल है? Anyone? Microphone. Shahriyar? कौन सा सेल है? ये आप कह रहे हो मैक्रोफेज है. It is present in the blood. Lymphocytes. No, actually, it is not lymphocyte. I just want to show you. This Monocyte. is present in the blood. This is monocyte. जब ये tissues में चला जाएगा तो it will become macrophage. So आप partly ठीक थे, but अगर आप surrounding cells को देखें तो these are the red cells with platelets. These blue dots are the platelets. So this is actually blood and this is monocyte. Once it leaves the blood and enters the tissue, it becomes macrophage. ठीक है? अब आप मुझे ये बताएं कि why I have shown the picture of these two types of cells in the very first slide, neutrophils and monocytes. मैम क्योंकि यही दोनों WBCs हैं जो कि इमिग्रेट करते हैं ब्लड वेसल्स से टिश्यू में जहाँ पे इंजरी हुई होती है इन्फ्लेमेशन कॉज करने के Very लिए. good, Harim, brilliant. But why only these two types of cells? Why not lymphocytes? Why not eosinophils or basophils? Why only neutrophils and monocytes? Any idea? Acute inflammation में neutrophils और Good. monocytes होते और हैं. chronic में और monocytes chronic- हो गए, monocytes और macrophages हो गए. But why these two? मेरा question वही पे. Why these two types of cells? Why not lymphocytes? Why not eosinophils? Because these two types of cells have the ability to phagocytose. They are phagocytic cells. And the primary purpose of inflammation is to get rid of the microbes or the dead or necrotic tissue. और वो कैसे होगा? By phagocytosis.
So these two types of cells are actually phagocytes, and these are important as far as the inflammation is. These are most important as far as the inflammation is concerned. So we'll be talking about these two types of cells. Correct? समझ आ गई जी? आगे चलें. Yes, ma'am. The journey of leukocytes from the vessel lumen to the tissue is a multi-step process that is mediated and controlled by adhesion molecules and cytokines called chemokines. इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सफर है, ठीक है ना, जर्नी है पूरा, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, और जो मल्टी स्टेप प्रोसेस इज मीडिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय एडहेजन मॉलिक्यूल्स एंड cytokines. The process can be divided into these steps. For example, in the lumen, what happens is that there is margination of neutrophils, rolling, and adhesion to endothelium. Then the neutrophils migrate across the endothelium and vessel wall. Neutrophils and monocytes migrate across the endothelium and vessel wall, and once they are out of the vessel wall, they migrate to the tissues towards a chemotactic stimulus. ठीक है, इस चीज को आप आगे जाके डिस्कस करें. Just concentrate on the picture. On the left side, do you see my cursor? Pointer nazar aa raha hai aap logon ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. This is a normal state of affairs in which the cellular elements of the जिसको हम laminar flow कहते हैं ना, the cellular elements are confined to the central position in the blood vessel, and they are separated from endothelial cells by a clear zone of plasma. Can you see it? The cells occupy a central position, and they are separated from endothelial cells by a clear zone of plasma. This is normal state of affairs. And normal endothelium under resting conditions does not allow cells to interact with, right? They are separated. But in acute inflammation, when there is vasodilation and when there is exudation of fluid into the interstitium, the result is stasis. The result is stasis. And this stasis leads to the pushing of these leukocytes towards the periphery. And now they interact with the endothelium. Again, this is a case of inflammation. So endothelial cells are also activated, and they express adhesion molecules or their ligands. So the WBC, they start interacting with the endothelial cells. Here you can see that cells have these neutrophils are attached to the endothelium. And once they adhere to it, the next step is the movement of cells across the endothelial cells to the periphery, to the outside the vessel. Okay, normally in laminar flow, cellular elements are confined to the central area, and they are separated from endothelial cells by a clear zone of plasma. But in case of acute inflammation, where vasodilation and seepage of fluid into the interstitium results in stasis, and here the neutrophils or monocytes, they start interacting with the endothelial cells. Endothelial cells are also activated, and they express adhesion molecules or their ligands. And now we see that the neutrophils are firmly adherent to the endothelium. And next step is movement of neutrophils outside the vessel, right? The process of leukocyte redistribution and assuming a peripheral position is called margination. यहाँ पे ये margination होती है, ठीक है? The slowed leukocytes क्यों है? Because यहाँ पे stasis हो गई, blood flow slow हो गया. The slowed leukocytes send signals from the endothelium, resulting first in the cells rolling on the vessel wall, and then recognizing adhesion molecules expressed on the endothelium that lead to the cells adhering firmly. तो यहाँ पे हम तीन नए लफ्ज यूज करें, एक तो मार्जिनेशन है, एक है रोलिंग और एक एडहेजन. Margination is the process of leukocyte redistribution assuming a peripheral position. The next step is rolling. Rolling, हम आगे जाके देखते हैं, that is again mediated by adhesion molecules and their ligands. But this interaction between the neutrophil and the endothelial cell is not very strong association. Okay, these are low affinity interactions. These are low affinity interactions, and this results in rolling off on the vessel. We'll see it in detail in the next class. यहाँ तक समझ आ गई है, हरीम? Yes, ma'am.
The attachment of leukocytes to endothelial cells is mediated by adhesion molecules whose expression is enhanced by cytokines, for example, tumor necrosis factor, IL-1, or chemokines, which are secreted by sentinel cells in tissues in response to microbes and other injurious agents. हमने sentinel cells की बात कल भी, कौन से होते हैं sentinel cells और उनका क्या काम? Minahil, Kareem, do you hear me? Kareem, Yes, ma'am. sentinel cells Ma'am? कौन से थे? कल हमने देखा था. मैम जो These are बॉडी के फर्स्ट लाइन डिफेंस very good, very good. ये इनके guards हैं, body के guards हैं. They just look for anything that is damaging to the body. तो ये कौन से होते हैं? Macrophages या dendritic cells हैं, ठीक है ना? And mast cells. They secrete cytokines, chemicals, cytokines, tumor necrosis Mediators. factor, IL-1, and chemokines when they interact with microbes and other injurious agents. And these cytokines enhance or increase the expression of adhesion molecules on the WBCs and on the endothelial cells. ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो endothelial cells और WBCs के ऊपर adhesion molecules और उनके ligands, their expression is increased. Their expression is increased in cases of inflammation because of the cytokines produced by the sentinel cells when they come across microbes and other injurious agents. There are two major families of proteins which are important in this regard: selectins and integrins and their ligands. ठीक है, देखो selectins और integrins जो है ना, they are actually adhesion molecules और जाहिर इनके counterparts जो है वो इनके ligands हैं. ठीक है, ligand के साथ क्या आपके adhesion molecule interact करेगा तो ही adhesion हो सकेगी. यहाँ तक clear है बेटा? Move करें आगे. अगर समझते आई तो यहीं पे रोक लो. मैम ये लास्ट लाइन दोबारा बता दें. ये भी हम आगे पढ़ते हैं. अभी हम आगे पढ़ते हैं. हमने ये बात की है अब तक कि sentinel cells in response to microbes and injurious agents, they secrete cytokines, and these cytokines upregulate the expression of adhesion molecules on the endothelial cells as well as on the leukocytes. There are two major families of proteins: selectins and integrins and their ligands. अब हम आगे चलते हैं. अब इसको selectins को देखो. Can you see the picture? These are some molecules. Yes. Selectins are responsible for initial rolling move. हमने पहले क्या बात की कि margination होगी, उसके बाद rolling होगी and then adhesion होगी. और rolling का हमने क्या कहा था कि ये low affinity interaction है between the adhesion molecule and the ligand. There are three types of selectins: L-selectin, which are present on the leukocytes; B-selectins, which are present on the platelets; and E-selectins, which are present on the endothelial cells. यहाँ तक बात समझ आ गई कि selectins are responsible for initial rolling movement. इसका मतलब है कि जो selectin के साथ इनका ligand की attachment होगी वो बहुत high affinity नहीं होगी. मैं आपको describe करूँगी, आगे एक picture आएगी उससे मैं आपको ये सारी चीजें दोबारा describe करूँगी. So there are three types of selectins: L-selectins, which are present on leukocytes, L से leukocyte; E-selectins, which are present on platelets; B-selectin is easy to remember, and E-selectins are present on the endothelial cells. ये तो याद हो जाएगा ना, ये तो मुश्किल नहीं है. The ligands for selectins are sialylated oligosaccharides. और अब इसमें थोड़ा सा गौर करो, जो lectin है, lectin, it is a generic name for the proteins that bind sugars. और यहाँ पे आप देखो ये oligosaccharide इसका ligand है, ठीक है? The expression of selectins and their ligands is regulated by cytokines produced in response to infection and injury. वही बात जो हमने पहले की थी यहाँ पे वो फिर repeat की है. Within 1 to 2 hours, the endothelial cells begin to express E-selectin and the ligands for L-selectin. P-selectin is also redistributed. इसको आप देखो कि within 1 to 2 hours, जब sentinel cells sense किया किसी injurious agent microbe को, they start producing cytokines, and these cytokines upregulate the expression of selectins and their ligands. ठीक है? Within 1 to 2 hours, the endothelial cells begin to express E-selectin. अब जाहिर है E-selectin ही endothelial cell के ऊपर express होगी ना, and the ligands for L-selectin. जो adhesion molecule एक जगह पड़ा हुआ है, for example
एंडोथेलियल सेल, तो जो चीज उसको बाइंड करना चाहेगी वो उसका लाइगैंड लेके आएगी ताकि काउंटर पार्ट उसमें फिट हो और उसके बाद इनका इंटरेक्शन जो है ना प्रॉपर हो सके, ठीक है। पी सेलेक्टिन इज ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. The other family is that of integrins, और integrins का स्ट्रक्चर देख लो, ये है, ठीक है। Integrins are a family of heterodimeric leukocyte surface protein. इसका मतलब है कि integrins जो molecules है, they are present on the leukocyte surface. Tumor necrosis factor and interleukin-1 induce endothelial expression of ligands for integrins. Vascular cell adhesion molecule 1 and intercellular cell VCAM1 and ICAM1. Vascular cell adhesion molecule 1 and intercellular cell adhesion molecule 1. These are the ligands for integrins. Chemokines that were produced at the site of injury bind to endothelial cell proteoglycans, bind to and activate leukocytes. वही बात है, chemokines endothelial cells को भी activate कर रही है और leukocytes को भी activate कर रही है और upregulate कर रही है expression of the adhesion molecules and their ligand. The leukocytes stop rolling, their cytoskeleton is reorganized and they spread out on the endothelial cell. Now, just concentrate on this picture. Can you see it clearly? Can you see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. This is the vascular lumen and this is extracellular space. ठीक है, interstitium हो गई, extracellular interstitium हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी vascular lumen है और this is lined by the endothelium. Now, this is a leukocyte. न्यूट्रोफिल है, जाहिर है उसका न्यूक्लियस ही बता। इसके अंदर इंटेग्रिन्स भी है, ठीक है, जैसे ये इंटेग्रिन है और इसके ऊपर सेलेक्टिन भी होगी। अब पी सेलेक्टिन जो है वो ये पड़ी हुई है, पी सेलेक्टिन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, बिकॉज़ पी सेलेक्टिन जो है एक्चुअली प्लेटलेट्स के ऊपर भी थे, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर भी थे। इट इज स्टोर्ड इन वीबल पैलेट बॉडीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द एंडोथेलियम। सो जब ये एक्सप्रेस होना शुरू होती है तो ये एंडोथेलियम के भी ऊपर आ जाती है और प्लेटलेट्स के ऊपर भी आ जाती है, बट ई सेलेक्टिन इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट ऑन द एंडोथेलियम। अब आप देखो कि इसके ऊपर ये इस तरह का एंड है, जो चीज इसको फिट करेगी उसका एंड ऐसा होगा ना। अगर ये ई सेलेक्टिन है, ये येलो वाली, तो ये ग्रीन वाला उसका लाइगैंड है और ये उस पर फिट हो जाएगा लाइक दिस, ये फिट हो जाएगा। बट जो सेलेक्टिन्स की इंटरेक्शन है, दे आर लो एफिनिटी, हमने बात की है ना। अब होगा क्या कि ये जो न्यूट्रोफिल है ये सेलेक्टिन को बाइंड करेगा, लेकिन ये बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी, इट विल डिसएंगेज, ठीक है ना। बाइंड किया लेकिन उसके बाद वो सेपरेट हो गया। जब सेपरेट हो गया तो जो और उसका लाइगैंड है, लाइगैंड ये अगले वाले पे बाइंड कर लेगा। तो दिस इज द रोलिंग, कि वो बाइंड करते हैं, डिसएंगेज होते हैं, बाइंड करते हैं, डिसएंगेज होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रोलिंग ऑफ द न्यूट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स, एंड दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय सेलेक्टिन, क्योंकि ये इनकी इंटरेक्शन इज लो एफिनिटी इंटरेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर होगी? Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Integrins are present on the surface of the leukocyte. ठीक है, इंटेग्रिन। अब ये क्या सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, इसका लाइगैंड कहाँ पे है? दिस। वो इस तरह का है ना, तो ये इसका काउंटर पार्ट इज लाइक दिस। अब देखो कि इससे जो इंटेग्रिन्स है, दे हैव बाउंड टू इंटेग्रिन लाइगैंड एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेग्रिन लाइगैंड इज increased on the endothelial cells because of the chemokines secreted by sentinel cells. और इंटेग्रिन के साथ जो एफिनिटी है ना, ये हाई एफिनिटी इंटरेक्शन। जो सेलेक्टिन्स के साथ है दैट इज लो एफिनिटी इंटरेक्शन, इंटेग्रिन्स और उनके लाइगैंड्स के साथ जो इंटरेक्शन दैट इज हाई एफिनिटी, एंड दिस रिजल्ट्स इन एडहेजन ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करेंगे डायपेडेसिस की। तो इस पिक्चर को जरा ध्यान में रखना कि द सेल्स, द न्यूट्रोफिल दैट इज, जी बेटा फातिमा। मैम में क्वेश्चन है। जी बताओ बेटा। यस मैम। मैम क्वेश्चन है कि आपने कहा है कि रोलिंग जब होती है
हाँ रोलिंग जब होती है तो हमारे पास सेलेक्टिन्स जो हैं वो बाइंड करते हैं एंडोथेलियल सेल के साथ, और वो तो मैम उस वक्त भी क्या साइटोकाइंस रिलीज होंगे एक्शन बढ़ाने, ये अफिनिटी बढ़ाने के लिए, कि जब हमारे पास एडिशन हो रही होगी तब भी साइटोकाइंस रिलीज होना? नहीं, साइटोकाइंस तो शुरू में ही रिलीज होना शुरू हो गई, ये एडिशन तो होनी उस वक्त शुरू हुई है। आपको जैसे हमने बताया कि 1 to 2 आवर्स में जैसे साइटोकाइंस निकले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर एंडोथेलियल सेल्स जो है ना वो अपने लाइगेंड्स वगैरह एक्सप्रेस कर देंगे, तो वो तो बात तो शुरू ही वहां से साइटोकाइन से हुई है। लेकिन देखो, बाय फॉल्ट या बाय डिफॉल्ट जिसको भी क्या, कि जो सेलेक्टिन्स की इंटरेक्शन है विद देयर लाइगेंड्स इज लो एफिनिटी, यानी इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। लेकिन इंटेग्रिन की जो एफिनिटी है विद देयर लाइगेंड्स दैट इज हाई एफिनिटी। जैसे आप किसी चीज को कंपेयर करो, कोई चीज लो एफिनिटी है तो वो है, एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लो रोलिंग, और जो हाई एफिनिटी है वो हाई एफिनिटी है, ठीक है ना। मतलब ये इनकी इंटरेक्शन ही हाई एफिनिटी इंटरेक्शन है। दैट इज व्हाई इंटेग्रिन्स आर रिस्पांसिबल फॉर adhesion of the leukocytes to the endothelial cells, and selectins are involved in the rolling movement. Is it clear, Fatma? रोलिंग, थैंक यू मैम। यस मैम। ठीक है। अब एडिशन के बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज डायापेडेसिस और ट्रांसमाइग्रेशन। इसको हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसकी पिक्चर देखो कि कैसे इसने अपनी शेप को मोल्ड किया हुआ है, एंड इट इज गोइंग आउट ऑफ द वेसल। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये समझ आ गई इंटेग्रिन्स की कि इट्स अ फैमिली ऑफ हेटेरोडाइमरिक ल्यूकोसाइट सरफेस प्रोटीन्स, ठीक है, which are present on the leukocyte obviously, and tumor necrosis factor and interleukin induce endothelial expression of ligands for integrin. Ligands कौन से? जो VCAM and ICAM. Chemokines that were produced at the site of injury bind to endothelial cells proteoglycans, bind to and activate. वही बात हम बार-बार करें कि chemokines है, they actually upregulate the expression of adhesion molecules and their ligands on the endothelial cells as well as on the leukocytes. The leukocytes stop rolling क्योंकि ये इंटेग्रेशन इंटेग्रिन्स की बात होती है। Their cytoskeleton is reorganized and they spread out on the endothelial surface. Is it clear, Fatma, Hareem? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Thank you. Thank यस मैम। you. Next step, as I told you, is the transmigration or diapedesis. It is an active process. It's not a passive process कि pressure पड़ा न्यूट्रोफिल के ऊपर तो वो बाहर निकले. It's not like that. So एक active process है, and it occurs mainly in post-capillary venules. Chemokines act on the adherent leukocytes and stimulate the cells to migrate through the interendothelial gaps towards the chemical concentration gradient. ठीक है, again ये भी chemokine mediated है. Adhesion molecules present in the intercellular junction CD31 or PCAM. PCAM है platelet endothelium cell adhesion molecule, platelet endothelium cell adhesion molecule. तो ये intercellular junctions पे मौजूद है, and they play their part in diapedesis. Leukocytes pierce the basement membrane, probably by secreting collagenases, and enter the extravascular space. ठीक है, and once they move out of the vessel, the basement membrane becomes continuous again. So, regarding transmigration or diapedesis, it occurs mainly in the postcapillary venules. It is an active process, and chemokines act on the adherent leukocytes and stimulate the cells to migrate through interendothelial gaps towards the chemical concentration gradient. Adhesion molecules present in the intercellular junction CD31 or PCAM1, they play their part in this process, and leukocytes pierce the basement membrane, probably by secreting collagenases, and enter the extravascular space. Is it clear? Anything confusing about diapedesis? Shall we move forward? आगे चले? यस मैम। Clear हो गया जी? यस। Once they are out of the vessel, अब उन्हें उस जगह जाना है जहां पे exactly microbes हैं या necrotic tissue है, या जो भी site of inflammation है, वहां पे इन्होंने जाना है. Chemotaxis of leukocytes. Chemotaxis, taxi क्या होती है? इसमें आप मूव करते हो, ठीक है? तो chemotaxis means locomotion of WBCs along a chemical gradient. Chemical gradient की वजह से जो movement of leukocyte है, that is chemotaxis. Locomotion along a chemical gradient, and the substances that lead to that support this process are the chemoattractants, which can be endogenous or which can be exogenous. Endogenous chemoattractants include cytokines, particularly those of the chemokine family, interleukin 8, components of the complement system, particularly C5a, arachidonic acid metabolites, mainly leukotriene B4.
ये जो केमिकल्स हैं इनका अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, हम कमिंग लेक्चर्स में इन केमिकल्स को, इन मीडिएटर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि chemotaxis of leukocyte means locomotion along a chemical gradient and the substances which cause this movement are known as chemoattractants, which can be endogenous or they can be exogenous. Endogenous में cytokines आ जाती है, components of the complement system है, particularly C5a, and arachidonic acid metabolites and mainly leukotriene B4. Exogenous chemoattractants में bacterial products including peptides with N-formyl methionine terminal amino acids and some lipids. आप इतना समझ लें कि exogenous chemoattractants they can be bacterial products, right? The nature of leukocyte infiltrate varies with the age of inflammatory response and the type of stimulus. Neutrophils predominate in the inflammatory infiltrate during the first 6 to 24 hours and are replaced by monocytes in 24 to 48 hours. अब नीचे अगर आप देखें तो दो इमेज हैं, जो A है this is that of the myocardium, ठीक है, वहां पे acute inflammation चल रही है, and here you can well appreciate that neutrophils are the predominant cell type. अपने न्यूक्लियस से आप इसको आइडेंटिफाई करें कि these are neutrophils. So this is neutrophilic inflammatory infiltrate. This is acute inflammation. While if you concentrate on B, these are mononuclear cells, rounded nuclei, the lymphocytes and macrophages. So this is chronic inflammation. So A is acute inflammatory infiltrate in which the neutrophils are predominant. You can very well appreciate these neutrophils. And the right side B is chronic inflammatory infiltrate in which the predominance is of the mononuclear cells, the lymphocytes and the macrophages. Clear? Move करें हम आगे. Yes. Yes. Yes, ma'am. ये वही पिक्चर है, इसमें अब आप ये देखो कि हमारे सेल्स ने रोलिंग की, then they become adherent to the endothelium, then they move out of the vessel wall and now they are moving towards the direction of microbes. तो इनका जो है ये exogenous chemoattractant आ गया ना, जहां को वो जा रहे हैं, ठीक है. This movement is known as chemotaxis movement of WBC. मैम जी बेटे. मैम ड्यूरिंग रोलिंग इंटेग्रिन्स की एफिनिटी लो होगी. देखो आप इंटेग्रिन हम कह रहे हैं उसका साइटोस्केलेटन इज रीऑर्गेनाइज्ड, ये हमने बात की है ना पीछे. तो देखो ये उसकी लो एफिनिटी स्टेट है, अब इसको कंसंट्रेट करो, ये इसकी लो एफिनिटी स्टेट है और ये इसकी हाई. इसमें तो उसका लाइगैंड मतलब इंटेग्रिन जो है जैसे मतलब वो बंद ही हुआ पर वो बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है. यहाँ पे वो खुल गया है टू बाइंड विद द लाइगैंड, ठीक है. क्लियर कि इनिशियली ये सब कुछ जो है एक्चुअली द साइटोस्केलेटन ऑफ द ल्यूकोसाइट इज आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग एक्टिवेशन. और हमने कहा ना कि वो स्प्रेड हो जाते हैं, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना. तो ये उनका साइटोस्केलेटन अगर आप देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि ये इंटेग्रिन की लो एफिनिटी स्टेट है, ये तो बाइंड ही नहीं कर सकती है अपने लाइगैंड के साथ, ठीक है. और ये उसकी हाई एफिनिटी स्टेट है व्हिच इज बाइंडिंग विद द लाइगैंड. क्लियर? यस Yes, ma'am. Phagocytosis and clearance of the offending agent. ठीक है. असल काम क्या था? हमने जो पहली स्लाइड में देखे वो दो सेल्स न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, हमने उनका जिक्र क्यों किया? Because they're phagocytic. Primary. Yes, they are phagocytic cells, and the primary purpose of inflammation is to get rid of the inciting stimulus and any dead or necrotic tissue that is present. यही मकसद है ना इन्फ्लेमेशन का. तो phagocytosis is very important. It includes recognition of microbes or dead cells. ठीक है. अब वो क्या करेगा? Recognition of microbes or dead cells induces several responses in leukocytes that are collectively called leukocyte activation. कि जब माइक्रोब से उनका एनकाउंटर हुआ है या डेड सेल्स के साथ एनकाउंटर हुआ है तो ल्यूकोसाइट्स become activated. Activation results from signaling pathways that are triggered in leukocytes, resulting in increases in cytosolic catechomines and activation of enzymes such as protein kinase C and phospholipase A2. Recognition of microbes results in leukocyte activation, and activation results from signaling pathways that are triggered. Activation में कहते हैं shape change भी हुआ है, cytosolic catechomines increased. Activation of enzymes such as protein kinase C and phospholipase A2. इनको next हम lectures में discuss करेंगे जब हम leukotrienes का और thymoxine A2 की बात करेंगे, ठीक है. Then is followed by phagocytosis and intracellular killing.
So let's see these things in detail. Phagocytosis involves sequential steps. First is recognition and attachment of the particle to be ingested by the leukocyte. And here you can see that red is the bacterium. It is binding to its receptor on the surface of the phagocytic cell, any phagocytic cell. Engulfment with subsequent formation of a phagocytic vacuole. ये उसकी engulfment होगी और ये हमारा phagosome एक phagocytic vacuole बन गया. Killing of microbes and degradation of the ingested material. This is done by the lysosomes. They get attached to this phagosome and release their contents into the phagosome, and this results in degradation of the ingested material. This is, in nutshell, the phagocytosis. Recognition and attachment of the particle to be ingested by the leukocyte. Engulfment with subsequent formation of a phagocytic vacuole, and killing of the microbe and degradation of the ingested material. हमने बात की है recognition of the particle to be ingested. कैसे recognize करेगा cell? There are three types of receptors: mannose receptors, scavenger receptors, and receptors for various opsonins. They enable phagocytes to bind and ingest microbes. So अब हम इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा concentrate करते हैं. Mannose receptors bind terminal mannose or fucose sequences of glycoproteins and glycolipids which are present in the microbial cell wall. And these mannose or fucose terminal sugars, they are not present in mammalian cells. So particularly जो microbial cell walls है, उनके जो mannose और fucose sugars है, उनको mannose receptors bind करते हैं. If the scavenger receptors, they actually bind oxidized or acetylated low density lipoproteins, again, which are again found on the microbial cell wall. Receptors for various opsonins. Opsonins are subproteins that coat the particle to be ingested, and the phagocytic efficacy is highly increased by opsonization. Opsonins जो है वो कौन से सबसे ज़्यादा important है? IgG and C3b. C3b is actually a product of the complement system. उसकी activation से तो ये हम next lectures में जब हम mediators की बात करेंगे तो हम detail में देख लेंगे. But once opsonins cover the ingested the microbes, the phagocytic activity is greatly enhanced and becomes efficient. After a particle is bound to phagocyte receptors, extension of the cytoplasm flow around, and the plasma membrane pinches off to form an intracellular vesicle which is known as phagosome that encloses the particle. ये वही चीज है जो हमने तस्वीर में देखा है. The phagosome then fuses with the lysosomal granule which discharges its content into it. Clear? Yes, अब ma'am. वो phagosome बन गया, lysosome ने अपने granules उसके अंदर pour कर दिए. अब this intracellular destruction of microbes and debris. Killing of microbes is accomplished by reactive oxygen species, also called reactive oxygen intermediates, and reactive nitrogen species, mainly derived from nitric oxide. And these, as well as lysosomal enzymes, destroy phagocytose material. Now, the destruction of phagocytose material, that is by three ways: reactive oxygen species, okay, reactive nitrogen species, and the lysosomal enzyme. Reactive oxygen species are produced by the rapid assembly and activation of multi-component oxidase NADPH oxidase, which oxidizes reduced NADPH and in the process reduces oxygen to superoxide anion. ये हम तस्वीर से इसको रिपीट भी करेंगे. अभी इतना कि reactive oxygen species are produced by rapid assembly and activation of NADPH oxidase, which oxidizes NADPH and in this process reduces oxygen to superoxide anion. Superoxide anion is converted to hydrogen peroxide mostly by spontaneous dismutation. NADPH की oxidation हुई और उस process में reduction होगी oxygen की to oxygen superoxide. This oxygen superoxide is converted to hydrogen peroxide mostly by spontaneous dismutation. H2O2 is capable of killing the microbes,
but is not able to efficiently kill the microbes itself. However, the azurophilic granules of neutrophils contain the enzyme myeloperoxidase, which in the presence of a halide, such as chloride, converts H2O2 to hypochlorite, the active ingredient in household bleach. अब मुझे बताओ कि ये बात कहने की क्या जरूरत है, the active ingredient in household bleach. Fatma, any मैम guess? हाइपोक्लोरस फ्री रेडिकल बन जाएगा ना, तो वो किल करता है बैक्टीरिया को, क्योंकि ये एक किस्म का रिएक्शन होता है. रिएक्शन हो गया, वो किल कर देगा. लेकिन हम ये क्यों करें the active ingredient in household bleach? क्योंकि मैम मैम usually क्लोरीन घरों ही में तो यूज बची Because फिनाइल्स लैब बैक्टीरिया में भी ये इतना जबरदस्त एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है कि जो हम लैब की क्लीनिंग करते हैं वो हम ब्लीच से करते हैं. ब्लीच का सोल्यूशन बनाते हैं, उससे हम लैब की क्लीनिंग करते हैं. इट इज सच एन एफिशिएंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. ठीक है, अब ये सोचो कितना एफिशिएंट है और ये हमारे बॉडी में बन रहा है. दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. ठीक है, hypochlorite is a potent antimicrobial agent that destroys microbes by halogenation, in which the halide is bound covalently to cellular constituents or by oxidation of proteins and lipids. ठीक है, going back, reactive oxygen species are produced by the action of NADPH oxidase on NADPH, which oxidizes NADPH and in this process reduces oxygen to superoxide anion. This superoxide anion is converted to hydrogen peroxide by spontaneous dismutation. Hydrogen peroxide is not able to efficiently kill microbes by itself, but the myeloperoxidase, MPO, which is present in the azurophilic granules of neutrophils, in the presence of halide ions such as chloride, converts hydrogen peroxide to hypochlorite, which is a potent antimicrobial agent. ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है इस तरह किल करती हैं माइक्रोब्स को. अब हम कंसंट्रेट करते हैं इस डायग्राम को, फिगर के ऊपर. इसमें वो 3 मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं which are involved, which can be involved in the destruction of the microbes. First step is the recognition of microbes and binding to phagocytic receptors. ये phagocytic receptor उसके साथ आपने आइडेंटिफाई किया अपने माइक्रोब को और वहां पे वो बाइंड करते हैं. Then the phagocytic membrane zips up around the microscope, around the microbe, and a phagosome is produced. Now the lysosomes, they get fused with the phagosome, and now this is known as phagolysosome. These lysosomal granules take good care of the microbe and degrade. This is one mechanism. The next mechanism that we have seen is the reactive oxygen species. NADPH oxidase oxidizes NADPH to NADP, and in that reaction, oxygen is reduced to superoxide anion. This superoxide anion converts to H2O2 by spontaneous dismutation, and by the action of MPO, myeloperoxidase, which is present in the azurophilic granules of the neutrophils, in the presence of chloride ions, it forms a potent hypochlorite, potent antimicrobial agent, hypochlorite. This is the other way of killing phagocytosed microbes. And third way is reactive nitrogen species. Nitric oxide is produced from arginine. And this nitric oxide interacts with superoxide anion and forms a highly reactive antimicrobial agent, which is peroxynitrite. This is highly reactive free radical. It also kills the microbes. So this figure shows the 3 mechanisms by which the phagocytosed microbes are killed. यहाँ तक कोई मुश्किल हो? हरीन? नो मैम. क्लियर हो गया? अगेन जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई हैं, फिगर्स दिखाए हैं, आई हैव टेकन दीस फ्रॉम योर बुक. और जब आप अपनी बुक खोलेंगे, बल्कि साथ साथ मैं आपको एनकरेज करूंगी कि जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी बुक्स आपके सामने होनी चाहिए. हम मार्क करते चले जाओ जो जो चीजें हमने पढ़ ली है. ठीक है, सो with this we come to the end of acute inflammation, जहाँ तक उसके vascular और cellular events का
कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, राइट? अब मुझे बताएं वास्कुलर इवेंट्स में या सेलुलर इवेंट्स में कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आए तो डू लेट मी नो। आप अभी भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अगर आपने बुक से पढ़ के कोई चीज समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन। मैम जी मैम ये जो बैक्टीरियल किलिंग में ऑक्सीजन डिपेंडेंट है जो हमने पढ़ा है, ये क्लोरस वाला, हाइपोक्लोरस वाला, राइट। तो मैम ये एमपीओ इस पे ही एक्ट, हाँ एमपीओ इस पे ही एक्ट करेगा कि हमारे पास जो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशी है उस पे भी एक्ट करेगा? नहीं, वो इस नाइट्रोजन पे नहीं आइलो है। पर ये देखो जो एमपीओ ना ये बेसिकली न्यूट्रोफिल में है। मैम नाइट्रोजन वाला एक बार रिपीट करते हैं। और ठीक है। नाइट्रोजन वाला जो ना दैट इज प्रेडोमिनेटली इन द मोनोसाइट, ठीक है? जो माइलोपेरोक्सीडेज है ना ठीक है मैम। ये न्यूट्रोफिल के अंदर एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स में, सो ये न्यूट्रोफिल्स जो किल करे ना ये मैकेनिज्म उधर है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड वाला है दिस इज प्रेडोमिनेटली सीन इन द मोनोसाइट। उसमें क्या है कि आर्जिनिन से प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम है जो कि बनाता है। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड देन इंटरैक्ट्स विद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो आप देखो NADPH की उससे बन गई है। एमपीओ तो बाद में हाइपोक्लोराइड बना रहा है ना, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो यहाँ भी बन गई है। तो अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ में तो वो पर ऑक्सीक्लोराइड बना, ठीक है? और वो भी बहुत हाईली पोटेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ठीक है? तो दिस इज इन द मोनोसाइट्स, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज वाला, दिस इज इन द न्यूट्रोफिल्स एंड दिस इज इन जेट, ठीक है? कि तीन बेसिक मैकेनिज्म है जिससे जो फेगोसाइटोज माइक्रोब्स हैं दे आर किल्ड, और दिस इज द मेन थिंग दैट इज टू बी डन। यानी जिसका मकसद ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज दिस, क्या फेगोसाइटोज करें और उसके बाद उसको डिग्रेड कर, गेट रिड ऑफ दैट, ठीक है जी? Yes, एनीथिंग ma'am, एल्स? thank you. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. So No, ma'am. with this we come to the end of today's lecture, and these are the sources from where I have prepared my presentation. और अगर आप ये देखें तो जो नीचे links हैं, these are actually of the images that I show, or you must have noticed that जो भी हम images net से लेते हैं उनको हमें acknowledge करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं उनको acknowledge कर रही होती हूँ, and that is why मैं आपको भी बता रही हूँ कि जब भी आप कहीं से सोर्स लें तो उसको किसी सोर्स से कोई चीज दें तो उसको एक्नॉलेज जरूर करें, वरना ये प्लेजरिज्म में आ जाती है बात, ठीक है जी? सो थैंक यू वेरी मच। I will meet tomorrow inshallah at 10:10 and we'll discuss the morphological patterns of acute inflammation. Thank you very much. Thank you, ma'am.